Hello guys, I'm Meghna Saharia and right now I'm in Wards Lake, Shillong. It's a very beautiful place as you can see. I'll show this lake to you in another video, but for today I'm going to make a video on how to write an essay. So आज का वीडियो होगा हिंदी में. पहले तो मैं एसएमएस में ही वीडियोस बनाती थी, लेकिन in order to cover a wider audience and to help you guys out, so I'm making this video in Hindi. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो सबसे पहले ऐसे राइटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और आप लोगों को ऐसे राइटिंग क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए. द इम्पोर्टेंस इज़ दैट दिस पेपर इज़ द मोस्ट स्कोरिंग एंड इट डज़ नॉट नीड मच ऑफ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन. सो आप लोगों का अगर प्रिपरेशन पहले से ही अच्छा है इन इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन ऑल द सब्जेक्ट्स बेसिकली जीएस पेपर्स, तो आप लोगों को ऐसे राइटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन इज़ योर राइटिंग स्किल्स. दैट्स अनदर थिंग इज़ दैट यू कैन स्कोर द हाइस्ट इन दिस पेपर. जैसे जीएस पेपर्स का एवरेज मार्क्स ज़्यादा नहीं होता है, इट्स अराउंड 120-130 मैक्स लाइक दैट. बट फॉर ऐसे पेपर्स यूपीएससी में तो 176 मैक्सिमम था. आफ्टर दैट आई डोंट नो इफ एनीबडी हैज स्कोर्ड हायर देन दैट, बट येस एज यू कैन सी फ्रॉम द मार्क्स कि ऐसे राइटिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दैट इट सेट्स द बेंचमार्क फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. तो आपका ऐसे जितना अच्छा होगा, जितना कोहेसिव होगा, आप लोगों को राइटिंग में जितना ज़्यादा कम प्रॉब्लम होगा, आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है. नेक्स्ट है आंसर राइटिंग प्रिपरेशन टू सम डिग्री. सो जब आप ऐसे राइटिंग करते हो या ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, देन यू इनकलकेट मेनी गुड वर्ड्स इन योर डिक्शन. सो आपके जो वोकेबुलरी रेंज है वो भी इम्प्रूव होता है, आपका राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होता है. सो दैट्स वाई इट हेल्प्स विथ योर नॉर्मल जीएस पेपर आंसर राइटिंग एज वेल. Okay, now certain things that you should do while writing an essay. You should remember these points. First thing is that you need to arrange very well. तो आप लोग का जो essay है, आप ऐसे भी मैं मानती हूँ कि ये ऐसे है, then you can write like very long passages and all these things. But the thing is, you're writing the essay for your examination, for your civil services examination. The professors, the teachers who check your answers, they check many papers. So it's very important for you कि आप लोग जब आंसर लिखे, जब essays भी लिखे, तब to the point लिखे और उसको अच्छे से arrange करके लिखे. You can give subheadings in your essay. Then you can change your paragraphs. That is how you'll arrange. Next, write concisely. Do not beat around the bush. You are given a topic. आप उस topic को अच्छे से explain कीजिए, उसके various perspectives को cover कीजिए. In the end, topic को अच्छे से justify करना पड़ता है. Next, always stay relevant to the point. हम लोग ऐसे होता है कि लिखते हैं और उसके बाद हम भूल ही जाते हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर लिख रहे थे. सो डू नॉट डू दैट. दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस. आप जब भी ऐसे लिख रहे हैं तो ट्राई टू स्टे वेरी रेलिवेंट टू द टॉपिक. The essay paper is of 3 hours and it's of 250 marks. So you have to cover these two. You have to write any 2 essays as of now, and you have to each essay is of 125 marks. Yes, and you have to cover it within 3 hours. So मैंने जब आंसर राइटिंग किया, मतलब मैंने जो ऐसे लिखा था in the examination, I reserved 20 minutes or almost 30 minutes for actually writing down the points in my question paper roughly, कि मैं कौन से पॉइंट्स ऐसे में उन दोनों एसेज में लिखूँगी. सो आई जस्ट जॉटेड डाउन माई पॉइंट्स दैट दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच आई विल राइट इन माई एसे. एंड दिस सेव्स यू लॉट ऑफ टाइम इन द लॉन्ग रन. नो डाउट आपका 20-30 मिनट्स आपने कुछ भी नहीं लिखा है अभी तक. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज आप जब लिखना स्टार्ट करोगे तब आपका फ्लो फास्ट हो जाएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट टू राइट. दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू फ्रेम, आप उसका स्ट्रक्चर, फ्रेम, सब कुछ, फ्रेमवर्क, सब कुछ अरेंज कर लो अपने दिमाग में विद इन द फर्स्ट 20-30 मिनट्स आफ्टर यू गेट द एग्जाम पेपर एंड यू चूज़ द टॉपिक्स. अच्छा, certain things not to do in your essay. So first thing is, you should not give bullet points as per my opinion, because it's an essay. हम लोग बचपन से जब ऐसे प्रैक्टिस करते थे, ऐसे राइटिंग, कभी भी हम लोगों ने बुलेट राइटिंग में ऐसे नहीं किया है, ऑलवेज इन पैसेजेस. सो आई वुड रिकमेंड दैट डू नॉट यूज बुलेट पॉइंट्स. And also you do not need any diagrams in your essay, because there might be 1 or 2 aspirants who may not know. That's why I'm addressing this, कि you do not need diagrams, or you should not draw diagrams in essays. It's an essay, you guys. So yeah, you can give anecdotes in the introduction or in the ending or in between as well. Anecdotes होता है short stories जहाँ पे एक moral lesson हो, जहाँ पे कुछ it's indicating the theme of the topic.
So you can give anecdotes, certain things which you should keep in hand while preparation for your GS papers anyways is certain quotations. So quotations on women empowerment, on development, on poverty, on hunger, all these kind of social economic problems, you can keep your quotations ready. And you should also keep certain statistics ready, so you can involve statistics in your essays. आप लोग अपने essays में statistics involve कर सकते हैं. It will show your knowledge upon the topic. नेक्स्ट आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, सर्टेन प्लेसेस, न्यूज़ में कुछ अगर रिसेंटली हुआ है, यू कैन गिव सर्टेन एग्जाम्पल्स लाइक दैट, वेरी शॉर्ट. ज़्यादातर करंट अफेयर्स तो हम लोग एसेज में नहीं लिखते हैं, लेकिन इफ़ इट्स रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल AI, इट्स अ टॉपिक विच इज़ वेरी रेलिवेंट नाउअडेज एंड करंट अफेयर्स में आता ही रहता है. सो दैट इज़ वाई यू कैन गिव सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ सर्टेन प्रोग्रामिंग्स डेवलप्ड और कुछ एप्लीकेशंस ऑफ AI एट्सेट्रा. एंड इन ऑर्डर टू गेट अ बेस फॉर हाउ टू राइट एन ऐसे, अगर आप लोग एकदम बिगिनिंग में पता नहीं होता है ना कैसे लिखना है, और एनीवेज इफ़ यू आर बिगिनर और एडवांस लेवल, इट डजंट मैटर, यू शुड ऑलवेज रीड सर्टेन एसेज फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विच यू विल गेट फॉर फ्री. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये सब बहुत फ्री में ही ऑनलाइन एसेज, पैम्फलेट्स ये सब प्रोवाइड करते हैं. सो ट्राई टू गूगल इट, गूगल में आपको सब कुछ मिल जाएगा. सो प्लीज़ सर्च एंड सर्टेन एसेज बेस्ड एसेज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एट्सेट्रा. तो आपको वहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएगा कि एसेज कैसे लिखना पड़ता है एग्ज़ाम्स में. सर्टेन टॉपिक्स विच यू कैन एक्सपेक्ट फॉर योर एसेज आर philosophical, it may be ethical, it may be moral, or it is also on democracy, on polity, on economy, social issues, justice, science and technology, etc. Stay very connected with the current affairs, newspaper, etc. And also read books like Manorama, जहाँ पे आप लोग को ऐसे राइटिंग का थोड़ा सा बेस मिलेगा. रीड कोचिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल्स एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड. सो दीज आर आई थिंक सफिशिएंट फॉर योर ऐसे प्रिपरेशन. एंड आप लोग ऐसे राइटिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं? एनी टाइम यू वांट टू. फॉर एग्जांपल you are bored today, आपको कुछ लिखने का मन कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, then you can start writing an essay. And before starting to write an essay, I recommend that you read essays from coaching institutes which are free of cost. वहाँ पे बहुत एक अच्छा format मिल जाता है, because then you will know how to write it, how to go about it. अगर आप लोगों को पता ही नहीं है कि beginning कैसे करना है, ending कैसे करना है, then how will you know, right? So इसलिए I strongly recommend that you read an essay before. Forgive me if my Hindi is not that great, because और इसलिए I am little out of touch with Hindi. और अगर आपका कुछ भी doubts हो, please write it down in the comment section below. I'll help you guys out as much as I can. And stay tuned with my channel. Thanks for watching. Bye bye. All the best, aspirants.